Hey guys, welcome back to another dev stream of the zombie game, and we are back with new goals. Animation की zombie speed, that did not make any sense. Yeah, so zombie का जो speed है अभी I think 5 पर है. I have to make it better. पहले तो हम अपना medieval scene निकाल लेते हैं. Medieval. 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 Okay, now go to resources, zombie. So I notice कि zombie बहुत ही धीरे चलता है. So let's fix that. Okay, so what I'm gonna do is go into behavior graph और इसमें मैं सेट कर रहा हूँ. So initially idea मेरा ये था कि मैं इसको जैसे बहुत दूर है. What is the definition here? Movement in self to 1. Parameter movement. Hold up. Zombie animator movement. So ये blend tree है. Idle walk run. Self navigate to target. उसके बाद attack. Hold up, where was that nav mesh? ये है ना. स्पीड 5 कर देते हैं और ये कर देंगे 2. Damn it, 2, not 32. God damn it, work properly game. ओके सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये रनिंग एनिमेशन प्ले करेगा एंड विल नेविगेट टू टारगेट और उसकी स्पीड होंगी 5. हावेवर सेल्फ क्या है? एजेंट. Maybe I should create a action. Set no pet. Create action. Set speed and SPWD, right?
Okay. Self. नहीं. Target is his target, na? Zombie will run. Okay, so what I'm thinking कि अगर zombie run कर रहा है run or walk. So what I was thinking कि अगर जैसे speed जैसे easy mode में खेल रहे हैं zombie will walk. मीडियम एंड हार्ड भी खेलोगे तो रन करेगा. रन और वॉक. डू मूवमेंट. Damn it. सेट स्पीड एंड एनिमेशन एक्शन. यस सेव इट फॉर नाउ. मैं इसका डेफिनेशन बाद में चेंज कर दूंगा. डू आई हैव टू डू दिस? नहीं, मैं इसका ही डेफिनेशन अगर चेंज कर दूँ. वैल्यू है 2. फ्लोट. एनिमेशन ब्लेंड. ओके. अच्छा, ये एनिमेटर फ्लोट है. सेट एनिमेटर फ्लोट. ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, राइट? तो इसको फिर मुझे ऊपर डालना पड़ेगा. एंड उसमें मैं सेट करूँगा कि इजी है, मीडियम है. तो जॉम्बी की स्पीड भी उस क्लास में ऐड करनी पड़ेगी. So this will be here. What is movement here? Movement is just a text. What is self? Self agent है. Definition. Next. Nav mesh agent will
set speed and एनिमेशन ब्लेंड। ठीक है, स्पीड हो जाएगा अपना बेसिक वैल्यू फ्लोट। कंफर्म एडिट। ठीक है, व्हाट? अच्छा, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट ए आई। ठीक है, ऑन स्टार्ट। वेट, मुझे पहले फिर वहाँ पे सेट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को इन दी सर्वर मैनेजर। वाह 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 वाह, सेट प्लेयर सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में गेम सेटिंग। ठीक है, ज़ॉम्बी स्पीड। ठीक है, सो अब इस सेक्शन में गए हम लोग। स्पीड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सर्वर मैनेजर। यस, ओके। देन उसके बाद ज़ॉम्बी डॉट वैल्यू डॉट स्पीड इक्वल्स टू, सो आई डोंट नीड दैट फ्लोट, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, राइट? अब उसके बाद इफ zombie dot value dot speed is greater than 3, तो else 1। zombie speed is smaller than equals to 3 and greater than 0, तो walk L0 idle। yes, status running, status success। अपडेट में चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार वैल्यू आ गई तो उसके बाद मैं क्या ही करूँगा। गेम के स्टार्टिंग में सेट हो जाएगा कि वो या तो दौड़ेगा या चलेगा। अगर ज़ॉम्बी स्पीड है 5, ठीक है,
zombies will set animation blend regular text, ठीक है. Confirm. Okay. Did I create an additional variable for speed? Let's try it out. Zombie की स्पीड मैंने रखी है 5. Then let's see. रनिंग एनिमेशन तो प्ले कर रहा है. टू. ओ वेट, वो ज़ॉम्बी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था. स्पीड 1 ही है. ओ ये दौड़ा दौड़ा दौड़ा. ठीक है, तो स्पीड सेट नहीं हो रही है. प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट है. नेविगेट्स टू गेम ऑब्जेक्ट इन हम टारगेट मोड. ठीक है. स्पीड स्पीड यहाँ सेट कर दिया उसने. सो स्पीड वेरिएबल ये हमेशा 1 पे सेट हो जाता है. वेट, लेट मी चेक इट आउट. अगर मैं स्पीड यहाँ 5 कर दूँ इसकी, क्योंकि ये नोट चलता है तो आई थिंक वो 5 हो जाती है. मतलब यहाँ मैंने 5 सेट करी, यहाँ वापस 1 सेट हो गई.
आई एम थिंकिंग ऐसा हो रहा है. लेट्स टेस्ट. यस, मैंने वहाँ पे वैल्यू सेट करी ना, तो ये सबकी पाथ स्पीड सेट हो गई. ओके, नाउ व्हाट शुड आई डू? Should I just copy paste this function and create a function or something? Or should I ask Chat GPT key? Okay, maybe I should ask it. I want to set speed from set speed and animation action. Ideally तो float speed value, ठीक है. I've updated that include configurable speed parameters in Blackboard variable. Why do I need that? अरे तो यही तो नहीं करना है मुझे. I want to set speed value from the class. चार चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट दे दिया मैंने. अबे तो ये तो मैंने भी करा था, तूने अपडेट क्या करा इसमें? Speed.
Hmm. Let's ask this. चैट जीपीटी का मैंने ट्रायल पीरियड ले लिया है, so why not? Copy, paste. Then I have set speed and animation. Paste. Action, but the value gets navigate to target action. What will you tell me, Gemini? The conflict arises both action are attempting to manage navmesh speed property independently. In your logic, speed run once and start the sequence, but immediately after ये method. Yes, I'm facing the, I know that issue. Yes, right here. Use blackboard recommended. Modify, change. स्पीड को फ्लोट रखना है. Create a float variable current speed. Pass current speed in your set node. Hey, wait a second. What if I do this? Navigate to target को ऊपर कर दूं मैं. फिर उसके बाद set self speed set from. ओके, यहाँ पर है 1. ठीक है.
स्पीड वन ही है. Why? Okay. 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 No, what you're asking me to do is कि मैं जो इसकी ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है नेविगेट टू टारगेट एक्शन उसको मैं चेंज कर दूँ. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डोंट वांट टू डू. क्योंकि ये डिफाइंड है ऑलरेडी एंड अगर आगे चलकर यूज़ आता है मुझे किसी भी चीज़ के लिए तो प्रॉब्ली नहीं आएगा. Here is the two best way to fix it. Option 1, use Blackboard. Recommended is designed to share data via Blackboard instead of your custom script talking directly to the Navmesh agent. Have it update the float. Okay, so create a float speed. uh, Zombie speed with a small z. Zombie speed. ठीक है. यहाँ पे edit definition. Speed is float. Float. ठीक है. speed dot value is equals to ये सर्वर मैनेजर. ठीक है. देन उसमें आगे क्या करना है. इन विजुअल ग्राफ क्रिएट अ फ्लोट. सेट स्पीड चेंज zombie variable to game object if it isn't already. Ensure that you are writing zombie to game object. Yes. Okay. ठीक है. ऐसा कर दिया मैंने. नेक्स्ट क्या कह रहा है वो. and ensure you are writing the speed as blackboard float instead of directly to agent. ठीक है. in visual graph create a float. pass current speed. in the inspector for the map to target node, click on the link icon. Zombie speed.
Speed, 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 speed. ये मेरा ओरिजिनल है. This is the modified one. ठीक है. Speed. What happens now? God damn it. That's what I have to do. Hey, 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 hey. Zombie speed. Okay, let's try it out then. Damn it, that's what I had to do. God damn it. Such and such a, such. Oh yes. Oh yes. I am faster. Screw you guys. Oh no. Oh no. Oh no. Go away. Go away, zombies. Ah, Geronimo. There's no fall damage in this game right now. Okay, so this is kind of an issue for me again. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Hard difficulty. I can mess with people. You know what I should do? Hey! I dead? Okay.
हाँ. Okay, so maybe what I should do is कि एक ये भी सेट करना चाहिए कि अगर मैं पास में आ गया, मतलब जॉम्बी अगर कुछ डिस्टेंस के, यू नो, आई एम थिंकिंग इज कि लाइक डिस्टेंस उनका 10 है तो जॉम्बी दौड़ेगा, डिस्टेंस उसका 2 है दोनों के बीच का, तो जॉम्बी विल वॉक, और मे बी 1. आई थिंक उसके एनिमेशन में एक ये इशू भी आ रहा था, जॉम्बी एनिमेटर अटैक 0.01. दोनों के बीच की ड्यूरेशन कम कर दी तो फटाफट अटैक कर सकता है. सी क्या होता है कि लाइक वो पूरा प्रोग्रेस बार खत्म होने के बाद अटैक कर रहा था. hmm. एंड व्हाट एल्स? प्रॉबेबली यहाँ पर मुझे उनकी स्पीड जो है सेट करनी चाहिए. अगर सबकी डिफरेंट स्पीड हो, लाइक 2 से 5, अगर 2 से 4 के बीच में. आई वंडर क्या मैं उसमें रैंडम वाला फंक्शन लगा सकता हूँ? नोप, नॉट दिस वन. मैथमेटिक्स. यूजिंग यूनिटी इंजन तो है ना ऊपर, तो क्या कह रहा है फिर ये? यूनिटी यूनिटी इंजन डॉट रैंडम सिस्टम डॉट रैंडम.
ठीक है। सो 2 से 4 के बीच में कोई भी फ्लोट वैल्यू, एंड 0 से 2 के बीच में 2 से ज़्यादा है तो, अगर 2 से कम है और 0 से ज़्यादा है तो मुझे अपडेट में करना पड़ेगा फिर वो। Scenes, go to medieval, then spawn zombie, spawn players. Zombie speed lower limit 2, upper limit 4, ठीक है। Oh, retry. Base offset speed 3, 215, 315, ओके। कुछ के पैरों में लगी है, वो दौड़ नहीं पाते जल्दी। zombies के लिए जंप लिंक डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ओके ओके, ज़ॉम्बी की स्पीड हो गई सेट। शुड आई डू फॉल डैमेज? ओके ओके ओके। Spawn zombies. Spawn next wave, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट वेव स्पॉन करने से पहले थोड़ा सा डिले डालना है. कैन आई जस्ट ऐड डिले? ठीक है. अगर मैं इसमें डिले दे दूँ 0f का, एंड यहाँ पे जब होगा ऐड लिसनर 0f, spawn next wave unity event float. ठीक है. तो ओके, स्पॉन zombies में यहाँ पर कोई इशू नहीं है. स्पॉन नेक्स्ट वेव, ये आएगा 0. आई न्यूमरेटर spawn wave को routine float delay. Yep, that's exactly what I wanna do. Maybe not, don't call this function here. Will that work? Start coroutine, spawn wave coroutine with delay. ओके, ये फंक्शन कॉल होगा, फिर उसमें चेक करेगा ज़ीरो तो नहीं है. अगर ज़ीरो, अगर zombies एग्जिस्ट करते हैं तो रिटर्न, रिटर्न नहीं तो स्पॉन वेव विद डिले. डिले जो है वो 0f है. स्टार्ट में जो कॉल करेंगे वो 0f से कॉल होगा. एंड ये यहाँ पर zombie 5f. That's good. Is that good enough? Is that how we do stuff around these parts? Okay, wait, let's just see how things go. उसके लिए मैं पहले चीज़ें अपने लिए थोड़ी आसान बना दूँ. स्पॉन zombies नहीं, डिफ़िकल्टी लोअर लिमिट 2.
0 2। ठीक है। My nose is itchy right now for some reason. They are walking slowly. स्पॉन zombies 5 स्पॉन हो चुके हैं, टोटल 5 होने चाहिए स्पॉन। एक गोली चल गई। गोलियों का कौन सा जवाब देना मुझे? What in the programming keep it up broski? Welcome to the stream. Yevnit sheep. 10 स्पॉन हो गए। I don't understand what you said. अरे मर जाओ यार। That's 15 zombies. तो अगर ये 15 सारे मर जाएंगे तो 5 सेकंड के डिले के बाद आना चाहिए। और मे बी आई हैव टू शट डाउन माई पीसी बिकॉज game broke so badly or something. 15, okay. See, all those zombies have different speed, तो there is an effect कि वो अलग अलग चल के आ रहे हैं। I feel like I should put in some object जिससे ये 1 2 3 4 5। Oh yes, oh yes. नंबर ऑफ zombies 15। अगर मैं यहाँ चेक करूँ, spawn players, नंबर ऑफ zombie 20। Go away zombies। आई थिंक वो अपडेट नहीं हो रहा है। ज़ॉम्बी स्पॉनर जो है ना, 15 स्पॉन हो गए। बीस ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए। नंबर ऑफ ज़ॉम्बीज शुड आल्सो अपडेट। 15 पे स्टक है वो। Am I actually using it somewhere? चलो होड का ये तो हो गया फिक्स। Now let's go to spawn zombies server script. Number of zombies, इसका मैं कहीं यूज ही नहीं कर रहा हूँ।
क्या मैंने गेम पॉज करा तो सारे ज़ॉम्बी स्टक हो गए? Maybe, maybe. Okay, this seems to be working fine. मैंने गेम पॉज कर दिया था तो वो मूव नहीं कर रहे थे. Now what I want to do next is create some food item. और ये spawn होंगे randomly. Okay, now I have a choice to make. कि मुझे ऐसा करना है कि आइटम इंटरैक्टेबल आइटम्स जैसा कुछ बनाना है कि मैं उसके पास गया एंड देन आई हैव टू प्रेस एफ, जिससे वो आइटम पिकअप करके उसकी हेल्थ बढ़ा देगा. या मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे टकरा गया प्लेयर उससे, वैसे ही जैसे प्लेयर उससे इंटरैक्ट, यू नो व्हाट आई मीन. इस कोड मंकी का एक ट्यूटोरियल है जिसमें वो कोलाइडर स्पीयर के थ्रू डिटेक्ट करता है कि किस गेम ऑब्जेक्ट से मैं टकरा रहा हूँ. एंड उसका नाम आता है. ऑन वन हैंड एक यूआई का फीचर ऐड हो जाएगा गेम में, जिसमें मैं आइटम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ. ऑन दी अदर हैंड ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं फ्यूचर में डिसाइड करता हूँ इसे मोबाइल एंड्रॉयड रिलीज़ के लिए, तो उनको हेल्थ बढ़ाने के लिए फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप दबाना पड़ेगा. मतलब उसके पास गए टैप किया तो उसने फूड उठा लिया. दैट माइट मेक द गेम डिफिकल्ट, so I should do that. Okay, so I plan to make another मैप जहाँ पे वो होगा लाइक सिटी वाइड रहेगा, सिटी वाला एनवायरनमेंट. एंड सिटी वाले एनवायरनमेंट में ऐसा रखेंगे कि आपको वेंडिंग मशीन से खाना लेना है. ओके, सो लेट्स क्रिएट दैट. एक मॉडल उठा लेते हैं. अई, अरे क्या था उसका नाम यार? पैकेजेस नाम था. बैरेक्स. यही है. फूड वन, फूड टू, फूड थ्री. चिकन.
गाइस चैट में बताओ, आर यू अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन, इफ यू एग्जिस्ट. क्रिएट एम्प्टी. बॉक्स कोलाइडर. अरे इतना बड़ा बॉक्स कोलाइडर करूँगा क्या मैं? डू 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 डू. डा 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 डा. आई एम प्रीटी श्योर इसका प्रीफैब बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको स्पॉन करूँगा. राइट राइट. थोड़ा सा. डैम इट. डैग नैब इट. टिंग स्टैंगस. I don't see your dot. God damn it. This is big enough, right? हाँ, काफ़ी है. ट्रिगर है. ट्रिगर हैप्पी. फूड. I remember doing the code monkey tutorial for Sanctuary Hills. Looking at this. Hello and welcome. I'm your detailed controller, the management engine. Character informational Unity star nest from the interaction system. So player game object, just attach an distance to each NPC. Distance work. And in here there's a zombie of them have too many objects. Okay. प्लेयर इंटरेक्ट का एक मैं डाल देता हूँ. God damn it. Player interaction. क्या करना है? एक इंटरैक्ट रेंज बनाओ 2F की एंड फिजिक्स ओवरलैप स्पीयर यूज करना है. ओके. अपडेट. फ्लोट. इंटरैक्शन. इंटरैक्ट रेंज. What? Unnecessary value interact range. Okay, physics dot overlap spheres.
time. Let's hit all of the objects in all of the layers, and then we can let's for the E key, just like in so many. So this cycle through all of them, and Collider array. Wait, so that means I have to interaction के लिए एक रखना पड़ेगा. Now interaction के लिए E रखना चाहिए या A रखना F रखना चाहिए. Since we are doing interaction, so probably E, right? Already exist. ठीक है. Interaction action. No, not enable. नहीं, इसको मैं डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ ना. Yes. If interaction is pressed. ठीक है. तो interaction range हो जाएंगी इसकी ये. Then collider. Then for each. Collider and okay. ये करा था. and then okay, Yeah, so I know. the capsules. So this is script for that. Let's attach the tab. So I'm just going to let's make it public. If we don't, and for this one, we're going to both part of this prefab. So make everything public. Correct. Cycle through NPC. Nothing happens. Now as I approach the NPC and press, and there you go, interact. All right, awesome. So with this, we already have the system working exactly as we wanted. Now all we need is to handle the interaction. This was made in a. Let's do that. So for the local header, No, don't need that. here and made simple in detail. Don't need that Object. either. So if I interacts with a great way to and look at. It's a better approach. Then on the Nope, player no, position, no. let's look at this one. NPC interactable. So let's add let's say elements on triggering. Nope, nothing happened. So plays the animation, the nice chat bubble, everything. Let's head rotate. This is fact the player interact UI. Then inside. Okay, what I want is key. I can just go to that script जो मैंने उस project के लिए बनाई थी. It will be so much easier than to go through this video again. जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है
Player interaction. So NPC interaction. Of road objects, so all of the ones behind me, the capsule, so this is the player's capsule, and so on. So none of them are the NPC, since the NPC is way too far away. But now let's move forward, approach the NPC about a little bit, and press the button again. And yep, now here we do see the NPC. Alright, awesome. So just with this, we already know if an NPC is within range. And now that we know that, the next thing is to actually interact with it. So let's make another script for that. A new C# script. Call this the NPC and demo all of these to NPC. Okay, now. So NPC interactable में करता क्या है actually exactly? To make this, let's just do now back here again. Update. अगर उसके पास जाके E दबाया interaction range. नहीं ये तो player की script है. That NPC interactable component. So we can go into the collider and we can use try get component. अच्छा वो try get component करता है NPC interactable. So that is basically a script है ना NPC interactable. उसने बनाई है. बट बाद में वो जाके ये बना देता है ना I think. That's exactly what this script is doing. So here just have a public function, get it on the it's called. Could add up here a kind of serialized approach would be to receive the interactor transform. So Chat bubble 3D dot create. NPC interactable. the player has the systems already player interact UI. The basic UI. Let's just on show we set active. So okay, let's then show player field, then on a reference. Now find them. Let's go over here and then this one. Let's just going to over here on UI script text equals NPC interactable, and let's get the interact to the player interact, and let's see. So here we have Alice. Okay, so it seems like it's working. However, over here the issue, but let's now NPC colliders. Why am I not refactoring this code? And you'll see why in a bit, so don't worry about that. Let's talk without directions. Simple toggle door, which set for yellow and toggle. And if so, we interact with it. Door interact on the door. Here, make it so. Okay, that one. So all of the logic works. But still, everything technically works. So this is one possible approach. All kinds of interactable objects. And now this player interact script, now this one is tightly coupled with the door and the button. So if we were to reuse this script on another game that did not have doors or buttons, then everything would break. And of course, anytime this approach works, but it's obviously not ideal. And so yes, this specific scenario is exactly where C# interfaces become so. Interface use कर रहा था उसने. I knew that. I know that. तो वो करता क्या है जहाँ तक मेरे को ध्यान है. You know guys, ये कोड मंकी का जो एक ये है, क्या कहना चाहिए अपना, कोड मंकी अपना एक कोर्स बेचता है ना, वो $299 का पड़ता है. दैट इज़ व्हाट 17,000 रुपीज़. मेरी सैलरी से भी ज़्यादा था. इसी चीज़ के लिए मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, मतलब नॉट लोगों को, कुछ लोग होते हैं जिनसे मैं थोड़ा सा खफा हो जाता हूँ अगर वो लोग ऐसे उल्टे सीधे पोस्ट करते हैं तो. हाँ, इंटरैक्टेबल. सो द आइडिया मेरा ये है कि ठीक है, इंटरफेस में क्या कर रहा था. Now here let's just
this is not a NPC, get into that interface. Go into the NPC. void interact, यही है. ठीक है. String get interact text. ठीक है, मैंने इंटरफेस बना दिया. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि एक स्क्रिप्ट बनाओ जो होगी ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन की. के ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन. अब इसमें मैं ये इंटरफेस कॉल करूँगा. आई इंटरैक्टेबल implement interface. Public string interaction tech. इंटरैक्ट में क्या होगा कि वो गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड hmm maybe don't call it object interaction then. Food interaction. ओके, ये अप्रोच लेने से आई एम फिगरिंग आउट एन इशू कि क्या होगा कि अगर जैसे हेल्थ बढ़ाने का सिस्टम है, वो अगर वो मैं लिखूँगा प्लेयर की स्क्रिप्ट में, तो अगर मैंने जैसे इंटरैक्ट करा तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि करा है कि नहीं करा है. इंटरेक्शन प्रेस करा है. आई वांट टू यूज दिस अप्रोच. ओह यस, आई रिमेम्बर कि वहाँ क्या हुआ था मेरी पुरानी कंपनी में, कि जैसे मैं स्पीयर से इंटरेक्ट करके पता लगा रहा था कि कौन सा ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है. यहाँ पर जो कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर ऐसा हुआ था कि ऑन ट्रिगर एंटर से डायरेक्टली पता कर रहा था मैं. ओके. क्रिएट एम्प्टी इंटरेक्शन. पैनल.
बाबलिया 72 उसको करेंगे हम ऑटो साइज पे इमेज center middle orientation make it not red black अरे F नहीं E होना चाहिए लिबरेशन तो वो बेसिक रहता है ना इलेक्ट्रॉनिक नोप ऑसवर्ल्ड भी नहीं है रोबोटिक लेट्स गो विथ रोबोटो 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 ठीक है interaction okay and aim canvas crosshair script. So we're here on the NPC interactable, and on this one, let's implement that interface. So we're going to implement the I interactable. In this case, that's it. We already have a void interact and a string get interact text. So in this case, we don't even need to do anything. The interface is already implemented. So let's implement our interface. And now we're going to get an error. So let's use to implement turn push. Then on the implement the interface. This common kinds of ifs depending. okay update collider ठीक है then उसके बाद for each Depending on all of the types of objects. Instead, let's just test for one. So just test for the I interface. तो मेरा प्लेयर इंटरेक्ट का ये है फॉर ईच लूप के अंदर इफ कोलाइडर कोलाइडर आउट इंटरेक्टेबल इंटरेक्टेड गेम ऑब्जेक्ट ठीक है Interactable. So if it so everything else, let's refactor this function. The only reason why I didn't do it a while ago is because it would break when we use other types other than the NPC interactable. But now that we are using a common interface, now this is super easy. Okay. यहाँ पर क्या लिखा है wait this is a separate function public interact interactable interactable get interactable object
So we just need to replace all of these references with this. तो उसमें उसने करा है लिस्ट ऑफ आई इंटरैक्टेबल इंटरैक्टेबल लिस्ट, पहले तो उसको इनिशियलाइज करा है, ठीक है। देन उसके बाद फ्लोट इंटरैक्ट रेंज, देन उसके बाद ये चीज़ करी है फॉर ईच फॉर ईच कोलाइडर इन कोलाइडर, अरे व्हाट द हेल, ओके वेट, यहाँ भी करा ना उसने, ये भी तो है। फॉर ईच कोलाइडर इन कोलाइडर अरे npc इंटरैक्टेबल डॉट ऐड, ठीक है। यार क्लोजेस्ट और इसका तो करना नहीं है मुझे। Let's all easy. So we just need to replace all of these references with this. रिटर्न क्या कर रहा था ये? Super easy. So we just need to replace all of these references with this. Let's also rename the name. Rename the names. Replace all of these references with this. Closest npc, wait, is this whole thing for the closest npc? Let's also rename the names. So interactable. And then up here, we use this function instead of doing the exact same thing. So let's just grab the interactable. And we get it. And if the interactable, it is not null. Return. God damn it. क्या मुझे स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा? Maybe I should close the stream and वहाँ से छाप लेना चाहिए कोड, because I've already done it. I don't remember. Awake. This is I feel like I'm putting too much efforts into this. मुझे बस उसको कोलाइडर में देख के कर लेना चाहिए, यू नो, कोलाइडर से डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि अगर ये इंटरेक्ट हो रहा है तो, एंड इफ यू प्रेस एफ तो इसका कोलाइडर चेक करेगा कि वो प्लेयर है This position. And that's exactly what this script is doing. So here, so on the, let's get it on the awake function, or perhaps a better of our, nope, nothing. See again, all. So add, now and instead let's we will enable script with the exact same name, player interact UI.
प्लेयर इंटरैक्ट यूआई क्या कर रहा था उसमें? Let's go. So we're going to show we set active. ओके तो गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके उसे चालू बंद करना है. serialize field game object interact UI public void show. यस ठीक है. True on how to function. We do not, and let's just make a function player not in the UI script. So let's leave it over here on the player script, and let's just make a function to expose that logic. So let's make a public. Let's return a NPC interactable, and let's call it get exactly this logic. So let's तो मैंने फालतू में लिखा हो. copy. So you have this, we get component and return the NPC interactable. कहाँ if के अंदर ना. And if we have none, then just return null. Okay, so we have this. Now over here on the UI element, we just need to call that. So serialized field, so let's make it a serialized field. Okay. Okay. तो ये मेरा प्लेयर इंटरैक्ट यूआई है एंड आई नीड serialize field player interact नाउ. मेरे साथ इशू ये है कि स्टार्ट में player interact equals to game manager player interact. गेम मैनेजर में प्लेयर की रेफरेंस ले रहा हूँ क्या मैं? सिने मशीन फॉलो कैमरा प्लेयर ले रहा हूँ मैं. दिस सीम्स लाइक टू मच एफर्ट्स बट अब कर दिया है तो करना ही पड़ेगा ये. सर्वर मैनेजर दोनों के बीच में एक होना चाहिए.
आई वुड नॉट नो कि अगर उसके पास सर्वर मैनेजर है या नहीं. प्लेयर ऑब्जेक्ट, ओके. गेम मैनेजर से कैसे मिलेगा उसको? फॉलो कैमरा में. असाइन वैल्यूज. ठीक है. प्लेयर इंटरेक्ट यूआई डॉट प्लेयर मेक इट पब्लिक. प्लेयर गेट, ओके. ठीक है. यस. Then on private void update, we ask that question, so player interact dot we get the interactable object, and if this one is not null, then there's something that can be interacted. So let's show. Okay. If player interact फंक्शन है ना ये. And if not, let's hide. All right, so that's it. Super simple. We just need to drag this reference. So over here, let's drag the player reference. That's it. Let's test. So here. All right. Um, प्लेयर इंटरेक्ट डाल दो कैनवस में. ठीक है.
button. Okay. We are far away from the range. That one does show up. So now I know that if I click here, no can do it. And if I click here, yep, there you go, interaction. Okay, great. Now, one more thing. Let's add support for multiple interactions. Over here, I already have two NPCs. Let's make sure we can interact with both of them exactly as we want. A serialized field, and let's fill that in. Hmm. You know, so इसमें अगर हेल्थ मुझे करना ही है, so I can do that. क्या बोलते हैं उसे, इवेंट्स के थ्रू कर सकता हूँ मैं. So let's say talk with Bob, and then for the other one, let's say talk with Alice. So let's go into our UI script. Over here on the UI script, let's serialize so that over here we can receive the NPC interactable. And let's go over here. Let's see. Approach Alice. Yep, there you go. Talk with Alice. Okay, so it seems like it's working. However, over here I'm talking with Alice, and even if I get close to Bob, there you go, I'm still talking to Alice. The issue here is due to the way that the collisions work, it's basically dependent on the order in the physics world and not necessarily the closest. So let's add that logic to make sure to check all. Guys, it's almost 3 p.m. and I realize that I have to do lunch. So I will pick this add food for health regain logic later. Hope you don't mind. So thank you so much for watching till now. And I will see all of you tomorrow with a new video, and hopefully we'll do this health regain stuff. I just probably not with maybe with this script. I mean, probably using following this script further, or maybe not. I will decide it. So thank you so much for watching, guys. Adios, muchachos. I mean, bye, guys. I don't know what muchacho means.